Hare Krishna, dear devotees. Dhanavad pranam to everyone. Thank you all very much for joining today's Japa session. We have been हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna. We have दंडवत प्रणाम we have been discussing from the book Japa by His Grace Gurijan Prabhu, who is a foremost disciple of Srila Prabhupada. So let us do a quick recap what we learned yesterday. So His Grace Anadi and Swan Prabhuji has shared us about the first key. So are you able to see my screen? Yes. Yes or no? Yes, Prabhuji. Great. Thank you. So the key, the first key is to chant Hare Krishna. So what he is talking of, why should I chant? This age of Kali is filled with ocean of faults. Dosa nidhi. Kalir dosa nidhi rajan. Asti hi ek mahan guna. There is a good quality. What is that good quality of Kali Yuga? Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Okay. So not only free from material bondage, but also promoted to transcendental kingdom. Param Brajet. Mukta Sangha and then Param Brajet. Mukta Sangha and Param Brajet. How? Na Kirtanat Eva Krishnasya. So by chanting or by doing Kirtan of Krishna, one can get this to benefit, uplifted to the Goloka and then by default free from material bondage. So because of this, Kali Yuga is spoken is having a very, very Mahan Guna, a great quality. Why? Because you see, you are working 8 hours at the 8 hours per day and 40 hours per week. So how much we are getting in return? Maybe few digit of salary. Right? That's our return. But if someone chants 2 hours a day continuously with attentiveness and offenseless, then what you will get? You will be promoted to Golaka. So this is how the result would be. So that's the reason it is Mahan Guna for Kali Yuga. It's the highest benediction of Kali Yuga. Just by chanting 2 hours, someone will be promoted to Golaka. How often should I chant? Sadahari. So every time, always. Okay. But if always is not possible, at least chant our prescribed number of rounds on beats every day. That also means always. So, you might say we have some problems. I am sometimes happy, sometimes distressed. No problem. Okay, sukhe dukhe bhalo nake badane harinama karore. सुख हो दुख हो हरिनाम हमेशा करना है। आप बोलोगे नहीं मैं तो गृहस्थ जंजाल में रहता हूँ बहुत सारा engagement है। No, 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 no. Whether you are sannyasi or grahastha, both are ashrama only. Ashrama. So these are meant for great endeavor to spiritual perfection only. Okay, सन्यासी गृहस्थ बीड ऑफबीट मेरे पास बीड नहीं है प्रभु जी कुछ भी नहीं है चैंट करो हमेशा okay just fill your lip with harinam at any condition so that means there is no excuse as such okay how often I should chant always and this process is empowered by Chaitanya Mahaprabhu because he himself came and then inaugurated this process of Nam Sankirtan and he himself played the role of a devotee and taught us how to practice this devotional service. So,
Then, by doing this, our heart will be gradually cleansed, and then seven effects of this verse one will manifest in us. कौन सा वो सात डिफेक्ट है? सॉरी, सात इफेक्ट्स है। बेनेडिक्शन, सेवन बेनेडिक्शंस आप जो है ग्रुप में डालोगे ना। तो सात बेनेडिक्शन क्या है? जैसे चेतो दर्पणम मार्जनम से लेके स्नापनम। सो ये सात जो इफेक्ट्स आप डालोगे, और अगर आपको वर्स याद है तो उसको रिकॉर्ड करके भी ग्रुप में डाल सकते हो। और नहीं याद है तो फिर ये मुखस्त कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने 8-10 बार तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी होता है साथ साथ हमको वर्स को दोहराना। क्यों? बिकॉज ग्लोरीज ऑफ दैट सेवन बेनेडिक्शंस अगर हमारा माइंड में रहेगा ना, तो दैट विल हेल्प। दैट इज द की नंबर वन। Then he begins with chapter 2. In this chapter 2, he is explaining, author is explaining that yes, there are seven results of chanting, and full glories to Krishna's holy name. But then why I lack attraction? Uh, why I lack attraction? So, explaining this, he is quoting this second verse of Sikshastakam. So let us chant this verse. Nam namakari bahudha nija sarva shaktis नाम नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति tatrarpitani amita smarane na kalaha तत्रार्पितस्मरणेन कालः itadrasi tava kripa bhagavan mamapi दर्शी आदि तव कृपा ममापि durdevam idrisam iha jani nanuragaha. दुर्दैवमे नानकः O my Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus, you have hundreds and millions of names like Krishna, Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. Nam Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis. There are not even hard and fast rules for chanting these names. There is no specific rules and regulation. At any time, somebody can chant. O Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy name. Tava kripa Bhagavan Mamapi. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. So here, author is telling why I lack attraction. Although Krishna's name is glorious, there are seven benedictions. If someone chants, and Krishna has made himself approachable through the holy name by knowing all of this, because we are unfortunate, that's the reason we are lacking attraction. So Durdaiva, this word is very key. So then further, he is explaining what are the four causes. He is explaining this Durdaiva, that misfortune. Because of this misfortune, we lack attraction. So he is extracting from this Bhajana Rahasya by Srila Bhaktivinoda Thakur those four causes of lack of taste. One is Tattva Vibhrama, then second is Asat Trishna, third is Hridaya Daurbalyam, fourth is Nama Prad. So today we'll discuss only Tattva Vibhrama, and then other three we'll see in coming days. Tattva Vibhrama means we do not know ourselves and we do not know Krishna. मतलब हम अपने आप को नहीं जानते हैं और कृष्णा को भी नहीं जानते। सो ये है तत्व। तत्व क्या है ना? जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, नित्य। ओके, बट so there is a relationship between we and Krishna, but Vibhrama, there is bewilderment.
सो तत्व को जानते हुए भी हम नहीं जानते हैं। इट्स लाइक दैट। कैसे? ना, वी डोंट नो आवर सेल्फ। हाउ? वी आर टाइनी बिकॉज वी आर सर्वेंट, राइट? एंड कृष्णा इज द मास्टर, but somehow I don't know where from we have got some conviction that we are significant. uh, because that is coming from bewilderment, lacking the depth of spiritual realizations. Uh, so there is a concept knowing doing gap, right? So why there is a gap between knowing and doing? Because lacking realization. अगर हमारा आत्मसात नहीं करेंगे कोई नॉलेज को, तो फिर गैप ऑलवेज रहेगा। सो इग्नोरेंस लीड्स टू थिंक दैट वी आर बिग एंड इम्पोर्टेंट। देन कि फिर हम क्या सोचने लगते हैं कि पूरा दुनिया जो है हमारा इच्छा के अनुसार चलता रहे, यू नो। और देन ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल नहीं है हमेशा कि ऐसे होगा। तो फिर हमको फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर आता है, यू नो। एंड देन फिर हमारा माइंड में डिवीजन स्टार्ट होता है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर एनिमी, these आर फ्रेंड्स, you know, I should think good about them, not think good about. So all these envy and all these things comes, and this leads to suffering because हमारा डीलिंग्स फिर अलग अलग हो जाता है। एनिमी के साथ हम अलग कुछ करने लगते हैं एंड उसका रिएक्शन कुछ और आता है, लाइक दैट। सो दिस जड़ है इग्नोरेंस। वी थिंक आवर सेल्फ बिग, बट एक्चुअली क्या है? हम टाइनी है, इनसिग्निफिकेंट है, सर्वेंट है। आवर कॉन्शियसनेस बिकम कैप्चर्ड बाय फॉल्स ईगो। ये जो फॉल्स आइडेंटिटी में कॉन्शियसनेस कैप्चर्ड हो गया है ना? क्यों? बिकॉज वो सेल्फ नॉलेज कमी है ना? वी आर कृष्णस इटर्नल सर्वेंट दैट कैनॉट बी अल्टर्ड ऑल्सो। आप जितना भी कोशिश कर लो वो अल्टर नहीं होगा। दैट इज द ट्रूथ। एंड इटर्नली यू आर गोइंग टू बी द सर्वेंट, यू कैन नेवर बी मास्टर। सो बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इटरनली हम सर्वेंट हैं, बट लेकिन वी हैव टर्न्ड आवर बैक ऑन हिम। कृष्णा को हमने पीठ कर दिया। ओके, कृष्णा को पीठ कर दिया है तो कृष्णा नहीं दिख रहे हैं। एंड वी ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम दिस इंट्रिंसिक रिलेशनशिप। दैट्स रीजन वी फाइंड आवर सेल्फ। सो जो हमारा जितना भी एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है, एम्प्टीनेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। So this is Tattva Vibhrama. We think ourselves big. And then we don't even know Krishna. कैसे? ना, neither we deeply understand the prescribed sadhana process। जो साधना प्रोसेस हमको दिया है हमने उसको अच्छे से समझे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है जब हम चैंट करते हैं, यू नो, आवर कितना सरेंडरिंग हो रहा है, हाउ डीप आवर सरेंडर एंड रियलाइजेशन। कैसे? ना, अगर हमारा रियलाइजेशन स्ट्रांग होगा, सरेंडरिंग स्ट्रांग होगा, देन फिर क्या है? वी विल डू द थिंग्स दैट हिंडर आवर भक्ति। नहीं, सॉरी, वी विल नॉट डू द थिंग्स दैट हिंडर आवर भक्ति, एंड वी विल डू दोज थिंग्स दैट विल हेल्प। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। क्या हम वो कर रहे हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज कल को अगर मुझे अच्छा राउंड चांट करना है तो आज मैं एक फालतू आर्गुमेंट्स में अपने आप को क्यों फेस करूंगा, क्यों शामिल करूंगा? बट लेकिन नहीं, हमको अपना इंपॉर्टेंस चाहिए। मुझे चैंटिंग ने पहले मेरा वो अभिमान जो है वो तृप्त होना चाहिए। तो ये सब आप अगर रिफ्लेक्ट करोगे बहुत सारा चीज मिलेगा। तो अगर चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, देन हम हमेशा वही काम करेंगे जो कि फेवरेबल होगा भक्ति के लिए, और उसको अवॉइड करेंगे जो कि अनफेवरेबल होगा, ताकि हमारा वो सेल्फ एस्टीम जाए, या हमारा कुछ अपमान हो, या हमको कुछ मिले ना मिले, जो भी हो। these are all secondary। फर्स्ट इज दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एंड हमको एक्ट करना है टू एनहांस दैट रिलेशनशिप। सो अब नहीं कर रहे हैं, दैट्स द रीजन। बेसिकली इट इज तत्व विभ्रम, नीदर वी नो आवरसेल्फ, नीदर वी नो कृष्ण। थैंक यू ऑल वेरी मच। सो आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, बिकॉज आज मैं थोड़ा टाइम नहीं देख पाया। सॉरी। थैंक यू। सो लेट अस try to overcome this tattva vibhrama. He will
give further solutions, and Prabhuji will explain us tomorrow other three. And taking this learning, let us chant nicely.